Hello and welcome to today's discussion on beauty of being an Indian Muslim. We have here with us a very distinguished guest, Amna Begum Ansari, who's a former research associate of Citizens Foundation for Policy Solutions. She is also a writer and a columnist. She also runs a weekly YouTube channel known as India This Week. Welcome, Amna, to our show. Thank you. So I'll start with a very basic question that how do you feel as an Indian Muslim? Um, just I feel fantastic. I think as an Indian Muslim, there is a Muslim word is specifically mentioned because a lot of narratives are around this identity. Like because you are Indian Muslim, you must be persecuted, and then other side thing you must be appeased. But for a Hmm. normal Indian Muslim on the ground, nothing happens. Even if Yeah. there is any appeasement or welfare scheme, so that reaches to the people who have a connection, some sort of, and mostly those people are well connected elite class people. So for the ordinary Indian Muslim, I see they live the life exactly their counterpart Hindu Brithen or Christian Brithen in India. I have a fantastic life. My life is like of any ordinary citizen, and the your how your life will turn on would be depending so much more in on your class rather than even your other identity. That's what I feel. I mean, if you come from a certain elite class, you would have so much privileges to achieve your dream or whatever you crave for or your desire for. And if you come from a lower strata, you would have a far more struggles. Though there would be policies to help you, there would be so many scholarship you can access, but it takes time to and a lot of effort to get that. So I think just the same way, like any Indian citizen will feel their life is, I feel the same way. Do you think, when we talk about Indian Muslims, do you think Indian Muslims are at a very better place as compared to the Muslims living in neighboring countries? Mm, a Muslim living in different country depends. If we compare with the neighboring country, 100%, because India in itself has achieved so much more. So if you are a citizen of a country which has a more to offer you, which has a more opportunity. I mean, for very simple example, we have an institution like ISRO. You don't have such an institution in Bangladesh or Pakistan. So if Yeah. an Indian Muslim dream to work for certain institution like this, want to research, want to go into scientific field, so he would have a that or she would have a that opportunity. The neighboring country citizen cannot have that, right? We have a so successful educational institution like IIT and those kind of institution. Plus Indian doctors are doing great. Even out of India, they have a certain they command certain respect for themselves. So everything an Indian citizen can access every opportunity an Indian citizen have, Indian Muslim have, and by default, the way India is developing, the India is. I mean, now we are biggest fifth in GDP, GDP's number in the world. So that profit you will access economically by default. Apart from that, if we talk about in societal setup, so we grow up in such a diverse society which change and which gives a lot of perspective. I mean, we see a society where everyone has a dignity regardless of their status. They are minority, they are majority, they won't be treated like anything else. Like in state never will discriminate, they will have a equal right, they would have equal opportunity. So when we see that kind of society and for example, let's say even you don't live in a very mix up society in your locality, you have a people from your own community, but when you would step out,
You would go to any institution, you would meet people from a so diverse culture, diverse different religion. You grow up respecting them, you grow up knowing that there is a thing called like human. You grow up understanding people can be different, but that doesn't mean they are bad people. They just have a different way of life. So Yeah. in that sense, I think Indian Muslim are very blessed, which very few Muslim, the Muslim who are in the West, they also get this opportunity, but still it's a very different. Most of the such a Muslim are immigrants child, like unlike us. Like if you see the Indian Muslim, they manifest a lot of characteristic the similar way their local Hindu brethren or Christian brethren will be doing it, and it Doing is based on like locality reason, not based like cultural, yeah, cultural. cultural background. Yeah, a Gujarati Muslim will speak Gujarati, so he would be similar in so many ways to a Gujarati Hindu when he will speak, the way he will eat, the way he will dress up, or she will dress up, rather than a Muslim from UP. So these thing like it's a very unique for Indian Muslim, and I do basically love it when I see this thing. So I do believe that Indian Muslims are so blessed being as a Indian Muslim rather than being Muslim in Pakistan or even in Bangladesh, I would say. And I'm so, even I have written an article that I am so, Yeah. I feel so blessed and I feel a sense of relief that my parents did not take such a decision to migrate and they stayed. Like, not only my parents, I'm my entire Khandan. We are in India and I'm so blessed for that. So we are finally reaching on this point where we are understanding that the unique identity Indian Muslims have. I mean, like you mentioned, Gujarati Muslim would be culturally very Gujarati. The only thing about his or her identity is that he is a Muslim or a Hindu. And same for Kashmiri people, same for South Indians. They will be culturally very attached to the area they belong to, and this is only unique to Indian Muslims. It cannot be seen anywhere else. I mean, as you mentioned, the Muslims living in other parts of America, they are all of them are immigrants almost. So when you described about IIMs, research organizations like ISRO and others, so you're particularly mentioning that educational background, privileges, and affordability plays a bigger role than identity. I mean, a Muslim who is able to afford going in, is able to afford to go to ISRO, go to IIM or institutions like that. They can afford it irrespective of being a Muslim or a Hindu. Yeah, I mean that is very true. I mean, we do listen certain incident where people try to portray that if you have a certain identity, it might be difficult for you to access those things. But I don't. I mean, I don't see there are not like there is a no presence of Indian Muslim in any field. If you talk about business world, I mean things like a cricket world. So imagine the kind of competition would be there to be a part of national team, because Yeah. we know the cricket is another religion in India, Yeah. but celebrated by everyone across the religious and caste or any boundaries. So you see the competition, and then you see like so many Indian Muslims are playing there. If they have a talent, they will get that opportunity. You see, I mean, so many religious, sorry, so many political position, so many position within the government. Like we have had so many Indian president who happen to be Muslims. We see the way APJ Abdul Kalam get loved by majority, Everybody, everybody. everybody. Like people do not even think he was Muslim or Hindu, they love him like anything. I mean, Hindu have opened temple in name of APJ Kalam. I mean, this is their way to show their love, Respect. Yeah. respect and love. So when you see that you get accepted like this, unlike when you see in the neighboring country where you are Hindu and you even get selected in a cricket team Yeah. and you face discrimination by your own team member because you are a Hindu. I mean, Dinesh, what is his name? Kaneria, Dinesh. I don't remember right now.
So he has mm, written in detail like how he has to face so much discrimination, then that he had to go to psychologist, and all the matlab, what was his uh, crime, that he was a minority and Hindu. So mm, he was a good, obviously he was a good player, he has a talent. That's why mm, he was selected in that Pakistani mm, team, but they couldn't accept him because he was a Hindu. So when you see that, and this is like something we Indian Muslims should also introspect, like why we mm, do so. Why, when mm, we are majority, do we still have this kind of tendency and mindset? If we do, we should fight, because we are getting so much benefit here of fair government, of fair society. I'm not saying ki it's a hunky dory, very like everything is perfect, but no mm. society is perfect. But Yeah. overall framework gives you those opportunity. So you should Mm, also adopt those values which you like here, being as an Indian minority. So mm, when I see in my neighboring country, I mean, forget everything. You know that only Nobel Peace Prize winner Muslim is in a Pakistan. And what mm, happened with him? Like people are not ready to accept that he's a Muslim, because I guess he's a Ahmadiyya, and mm, they go to his grave and do all kind of mischievous mm, activities there to show their disrespect. They don't care he has won the Nobel Peace Prize for the Pakistan. That is the status there. So, mm, and here you see, it doesn't matter if you're Muslim, you're Christian, as long as people see that you have the same nationalism or patriotism, love for people, you're doing good for the people, they would love you back. It depends on your actions. If you manifest certain kind of action, they would love you. If you are a criminal, they will hate you. It doesn't matter if you're Muslim or Hindu, right? yeah. So that's how I feel, and I think now time has come up, apart matlab going beyond all those narrative which certain people play. We should come stand up as an Indian Muslim and Mm. speak all those reality. And first we have to get out of our preconceived Own notion, own mindsets, yes. our So own victimhood. yeah, do you also think that when it comes to India as a country, we are playing a very good role in not, state not getting involved into personal affairs of people, whether it's minority or majority? I mean, I did not get it. Like, state is doing very good State job. doesn't, I mean, it is a positive point for a country that India doesn't get involved as a state in personal affairs of Muslims or anybody else. Like in India, a Muslim can practice hijab or can be without hijab, can practice their religion in any way they want. So do Yeah, you yeah, think it's a very positive notion for a country, because for other countries there are some state laws involved with yeah, hijab yeah. and practicing religion? I think it's a very great thing. I do. There is a more nuances to it. I mean, states sometimes get involved when they feel there is a big human right violation, and this is Hmm. like also a funny thing, which I have a little bit complain also. So when if it's a Hindu community, Hmm. state keep getting, poking their nose in a lot of their rituals, because they say, Hmm. okay, this is not very, in accordance to human right. Even that, what is called, like there is this game where, not game, I should not say that, there's a ritual where they have a buffalo, or या फिर कुछ buffalo नहीं होता है, ox or something, and उसके साथ वो कुछ भीड़ इकट्ठा होती है, फिर मतलब they have a certain ritual. So now they are saying Which कि part of India is it? this is in the South India side. uh, I'm just not remembering name, because a lot of Hindu now complaining कि हमारे rituals पे इनको बहुत जल्दी याद आता है कि ये animal rights का violation है, जबकि Hmm. बाकी Hmm. बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, right? Hmm. Hmm. देयर वुड बी थिंग्स कि नहीं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप नहीं करेंगे। देन मूर्ति विसर्जन होता था तो उस पे बोलते हैं कि इकोनॉमिकली आप इस तरह की ही मूर्ति बनाइए। एंड Hmm. देयर हैव बीन सर्टेन रॉन्ग प्रैक्टिसेस आल्सो, लाइक सती प्रथा तो बहुत पहले ही बैन हो गया था। Hmm. इवन द Hmm. चेंज बाल विवाह, जो कि अब वो अगर मुस्लिम्स को बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप Hmm. भी अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, तो यू सी अ लॉट ऑफ मुस्लिम लीडर्स, दे आर स्टैंडिंग एंड देन सेइंग कि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है।
ये तो स्टेट सोच रही है कि Also referencing from religion कि हमारे इधर हाँ, allowed है. हमारे रिलीजन में अलाउड है तो यू कांट डू दैट। तो मैंने तो Hmm. हमेशा ये देखा है कि स्टेट ने हिंदू रिलीजन में तो बहुत इंटरफेयर किया एंड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग इन द नेम ऑफ लाइक इक्वालिटी, फेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी के नाम पे। Hmm. लाइक Hmm. अकॉर्डिंग टू हिंदू, मतलब जो उनका एक सेटअप था, यू आर नॉट ओनली मेन यूज टू गेट इनहेरिटेंस, विमेन का हिस्सा Hmm. ही नहीं था। Yeah. दे Yeah. चेंज इट इन 90s, दे सेड नहीं ऐसे Hmm. नहीं हो Hmm. सकता, राइट? नाउ Hmm. इंडियंस में क्या है कि विमेन विल गेट इनहेरिटेंस बट इट वोंट बी इक्वल टू द मैन। Equal अब नहीं है. हाँ, Hmm. तो अब वही अगर स्टेट बोलेगी कि नहीं भाई ये गलत है, यू शुड गिव द इक्वल, तो बोलेंगे कि Hmm. हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, वी आर गेटिंग टारगेट, यू आर नॉट गेटिंग टारगेटेड, स्टेट्स वर्क इज टू ब्रिंग प्रोग्रेसिव वैल्यूज विद इन। तो Hmm. वहाँ आई इवन सपोर्ट स्टेट कि नहीं प्लीज यू डू दिस थिंग बिकॉज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू वर्क ऑन सोसाइटी। लाइक स्टेट हैज Hmm. प्लेड अ वेरी बिग रोल व्हेन इट्स कम टू द ये जो घूंघट हटाने का पूरा वो है। हाँ. तो दे Hmm. नेवर मेड एनी रूल लाइक यू आर Hmm. अलाउड टू डू इट, बट उन्होंने अवेयरनेस कैंप, जो कैंप चलाते हैं वो बहुत चलाए हैं इन द स्पेशली गांव के अंदर, वहां बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे। राजस्थान Hmm. के अंदर तो गहलोत सरकार ने स्पेशल चलाया था कि घूंघट छोड़ो दुनिया देखो, दैट काइंड ऑफ अ कैची स्लोगन, Hmm. एंड आई हैव Hmm. बीन Hmm. लिसनिंग दोस थिंग। Hmm. पॉलिसीज बनाई है कि अगर किसी गांव की सारी औरतों ने घूंघट हटा करके, मतलब पल्लू चेहरा मत ढको बेसिकली, तो Hmm. वी वुड बी गिविंग देम 25 lakhs टू पूरा गांव को कि ये पैसा तुम अपने डेवलपमेंट में लगाओ बिकॉज योर विमेन हैव अचीव दिस थिंग। बट Hmm. जब मुस्लिम्स का आता है ना, तो बल्कि स्टेट गवर्नमेंट वो काफी डर जाती हैं। दे विल नेवर Hmm. से कि ये हिजाब चलो अलग चीज है, बट बुर्का जहां चेहरा ढकता है, व्हाई यू नीड टू हाइड योर फेस, यू व्हाई यू Hmm. नीड टू हाइड योर आइडेंटिटी, बट दे विल Yeah. नेवर से बिकॉज इतना सा बोलेंगे एंड it will turn into something like state is oppressing us. So they Hmm. even don't do the progressive values, they don't work on that. And Hmm. many a time, I mean, as a Muslim community, we keep asking कि state ये करता है, state वो करता है. Do we understand how much burden we become sometime for the state? I mean, there Hmm. is a proper written ये पूरा का पूरा evidence है कि जब पोलियो को खत्म करने का पूरा ड्राइव चल रहा था, तो Hmm. स्टेट को शायद दुगुना या तिगुना एफर्ट पुट करना पड़ा था मुस्लिम कम्युनिटी को रेडी करने में के लिए कि आप लो पोलियो, because we Hmm. have a certain element where not every Muslim but a section of Muslim would be so I mean so influenced, would be influenced Hmm. by clergy. क्लर्जी ने Hmm. बोल दिया कि नहीं लेना है Hmm. इस्लाम, और इस्लाम के खिलाफ कैसे, किसी को पता नहीं है, उन्होंने कह दिया इस्लाम के खिलाफ है। दिस इज व्हाट हैव बीन हैपनिंग इन पाकिस्तान, अभी भी होता है Hmm. वहां पे। इस्लाम में Hmm. खिलाफ है तो बच्चों को तुम्हारे पोलियो हो जाएगा, तुमको इंजेक्शन नहीं लेना है। तो स्टेट को डबल इफर्ट, ट्रिपल इफर्ट, एंड इवन द कांग्रेस के, I mean, if you think the certain government is discriminative against it, this is the data and proper evidence from the Congress ruling government जो उन्होंने पूरा दिया है। तो हम कितने बर्डन बनते हैं स्टेट पे, हम कितना नहीं सुनते हैं। We have to Hmm. introspect. We need to be a good model, a good citizen, instead of always demanding from our state. Hmm. And I think Hmm. yes, it is a very good thing that state mostly believe you are free. Hmm. I mean, you Yeah. are Ahmadiyya Muslim. I don't understand why do Muslim we have this problem कि ये certain चीज हमें control करनी है. Why do you need to control? You practice your own Hmm. religion. As Hmm. long as you can be peaceful, nobody is interfering in that. You should be Hmm. happy. But then we have this thing कि Ahmadiyya Muslim Muslim नहीं है. So how could they call themselves Muslim? Hmm. Right. So Yeah. in neighboring country like Muslim majority Pakistan में Ahmadiyya कम्युनिटी सिस्टमैटिकली लाइक स्टेट की तरफ से डिस्क्रिमिनेट होती है, जहां बिफोर टेकिंग द पासपोर्ट दे हैव टू डिक्लेयर दे आर नॉट मुस्लिम्स। इमेजिन यू हैव टू पुट दिस थिंग, और वहां पे साइन करना पड़ता है फॉर्म में Hmm. कि हम मुस्लिम नहीं हैं, because the Hmm. state won't give you otherwise passport. This is the status of Ahmadiyya Muslim. कादियानी करके बोलते हैं उनको, एंड जो जो ब्रंट वो फेस करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस फ्रॉम द Hmm. सोसाइटी, दैट्स डिफरेंट।
अपार्ट फ्रॉम वो स्टेट से भी बहुत कुछ फेस करते हैं. यू वोंट फाइंड दिस थिंग इन इंडिया. तुम शिया मुस्लिम हो, यू वांट, यू बिलीव यू आर मुस्लिम, यू आर मुस्लिम. आप बोहरा मुस्लिम हो, कादियानी मुस्लिम हो, आप मुस्लिम हो, एंड एवरी मुस्लिम को एग्जिस्ट हियर, which is a very beautiful things. And कभी मतलब देयर हैव बीन, जब मैं ग्रो हो रही थी इंडिया में, तो कभी कभी मैं सुनती थी, लाइक माय नानी यूज्ड टू से दिस वेरी डिस्क्रिमिनेटिव एंड बायस थिंग दैट इवन गेट, मतलब मोस्टली in our khandan people believe कि you should only get married to Muslim and plus get married into your caste. This is very much prevalent, nobody That accepts. is everywhere. या बट देन दे वुड से कि भाई एक पल को हिंदू से शादी कर लेना, बट शिया से मत करना. एंड आई यूज्ड टू I'm से a कि Shia. एग्जैक्टली, वो मेरी नानी का एक था. मैं क्यों, डोंट नो, बस एक फ्रेज है, ठीक है. एंड देन सेकेंड जनरेशन तो वो भी भूल गई अभी, लाइक दे डोंट रिमेम्बर, वो नानी के टाइम पे था. बट वो डिस्क्रिमिनेशन विद इन होते हुए भी, व्हेन आई विल मीट अ शिया मुस्लिम, आई विल नॉट हैव एनी, मतलब मेरे लिए तो वो एक, पहले तो मैं हिंदू से ही फ्रेंडशिप करूंगी, शिया तो थोड़ा और मुस्लिम है, तो यू वोंट इवन फील दैट काइंड ऑफ, यू नो, जिसको बोलते हैं दुश्मनी या एनिमिटी. There's a discrimination in mind which has no justification. अगर आप justification पूछना भी चाहोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा. हाँ, but the same time because we live in India, so we are so blessed that वो मैटर भी नहीं करता. You individually are free to meet the people and be the Yeah. friend, मतलब from And various marry backgrounds. anybody you want to. Yes. Yeah. So we also had the similar discrimination when we were growing up. It is part of it is the same caste and same religion or whatsoever. So it is everywhere. Shia get married to Shias, Sunni get married to Sunnis, Sayyids get married to Sayyids. So there's a bias which has no justification, which we don't know why we are practicing, but people are practicing it. But still, again, I'm going to the main focus point. State doesn't just get into these terms. You want to marry anybody you can, you want to be friends with anybody you can. There's no involvement of state of how you should live your life. Yeah. You have been also very vocal about the cultures we practice. Like you had mentioned on your Twitter that the haldi ceremony, mehndi ceremony, where does all of these come from? Like when we talk about Muslim rituals of marriage, there has, like, we have practiced a very simple nikah sort of thing where we don't give much due to the yellow haldi ceremony, and mehndi ceremony should be separate in a theme. So it has mixed up over time, like a lot of things, inspirations Hindu take from Muslims and Muslims took from Hindus, and it's normal in our culture. So do you think when our kids, generation ahead, grows up in this sort of nature where we have acquired cultures from each other, eating habits from each other, this makes them a very broader person from brains, this shifts their perspectives, and also this tells them how to be tolerant towards another person and how to live cohesively in a society? Yes, the mostly I do highlight this thing because I want to tell Indian Muslim that you are Indian Muslim. In fact, Bangladeshi Muslim and Pakistani Muslim, they have been Indian Muslim. The thing Hmm. that the most, come se come Bangladeshi Muslim don't have this disease that they see, try to find their identity outside of their nation. They acknowledge their Bangladeshi Hmm. heritage or culture. But Hmm. Pakistan ki taraf, when we see the most of the Pakistani, sometimes they say they are a Turk, I'm sorry, they are Saudi Arabic. Now they have a new trend जहाँ पे वो बोल रहे हैं हम टर्क से आए हुए. So when you have a identity crisis, where your Hmm. country would be going? So the Hmm. first step to achieve anything or to create a society with progressive Hmm. values and Hmm. a society which can find more and more solution, which can put a framework which is better for the society. First you have to accept your reality. जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी सोसाइटी की रियलिटी क्या है, किस चीज पे Hmm. वो बेस है, एंड कमी भी क्या है, इवन यू हैव एनी फ्लॉज इन सोसाइटी, यू हैव टू एक्सेप्ट, देन यू कैन ओनली वर्क ऑन इट. यहाँ तो हम रेडी नहीं है मानने को कि हमारी आइडेंटिटी कहाँ है, तो हम कहाँ जाएंगे आगे. सो majority of Indian Muslim are converted, Hmm. and when they are converted still you would have your जो आपका जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो आपके कस्टम्स हैं और जो आपका कल्चर है,
वो तो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे. एंड माइंड इट, द पाकिस्तानी मुस्लिम ऑल्सो सेलिब्रेट दीज थिंग्स लाइक Hmm. हल्दी का रस्म है, मेहंदी का Hmm. रस्म है, वो भी करते हैं. उनसे पूछो दुनिया के In fact, बाकी there has been a recent trend where I have personally noticed that Pakistani brides love to get ready like Indian brides with red lehengas, and the entries are similar. They are, in fact, cherishing Indian designers to make their marriage look like more Indian and Indian ritual, like Rajasthani sort of. So, yeah, this exactly. shift, I think, is mandatory because we cannot be very strict with our cultures. Exactly. So you have, when you're doing it, and I mean, आप अरब के लोगों को देखोगे, सऊदी की मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन वो लोग गाउन पहनते हैं. It would be very Hmm. heavy, Yeah, and yeah. many a time I have seen like a lot of Indian, sorry, Muslim bride, they wear white. Even Afghanistan में white पहनते हैं, you see. Hmm. So they would Hmm. be wearing this white, जैसे Christians पहनते हैं. So these have to more to do with the your culture. And the Hmm. moment we will be start accepting that ये हमारा culture है, we will Hmm. see how we are connected to this land, how we are Hmm. connected to our Hindu Christians, Indian Hindu Christians and all. Hmm. Hmm. And then instead of first trying to make yourself first Muslim, you will feel yes, we are first Indian. I'm not Hmm. saying you should feel connected to every human being based on humanity. That's Hmm. very different. But then you also even हमारे हमें ये भी बताया गया है इस्लाम में भी कि पहले आप अपने नेबर की परवाह करो. नेबर की परवाह करो. है ना? Yes. जब आप ज़कात देते हो तो पहले Hmm. नेबर को दो, देन नेबर. अपने Hmm. दूर के जो रिश्तेदार को. रिश्तेदार हैं उनको तक दो. Hmm. एंड यहाँ मैं इंडियन मुस्लिम्स में देखती हूँ कि दे वोंट बी केयरिंग कि हमारे जो बगल वाले हिंदू हैं उनके साथ क्या हो रहा है, एंड दे वुड बी केयरिंग कि पैलेस्टाइन के मुसलमान के साथ ये हो रहा है. In fact, there's a very thorough term we use for neighbor is hamsaya. हमसाया. Hamsaya means आपका साया. यस. They are. I have heard this from my mother also. Ki why the first preference is a neighbor or hamsaya, because whenever you have some issues with life, now you face some certain things. Neighbor is the first person to be there in your sukh dukh because they live around you. वो आपके आस रिश्तेदार बाद में आते हैं. Exactly. So So we have neighbor has a very important place important in. role. Exactly. So when we realize our bond, our connection, it would be helpful to create more cohesive society. It would be helpful for Muslim to realize what they Hmm. really are, where their Hmm. loyalty lies. I mean, I don't believe that a lot of people say that Muslims' loyalties can be questionable. I have been growing up in with my entire khandan with the love of India, but I Hmm. do know there have been elements also. I Hmm. I mean when we try to totally reject it, तो भी हम Hmm. अच्छा नहीं करते, which is the problem is a problem. But we Hmm. have to be vocal enough within the community. Hmm. अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि आपको जनरलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज हमारे विद इन कम्युनिटी से वॉइसेस ही नहीं आती है Hmm. उनको अपोज करते हुए ऐसे चीजों को, तो लोगों को लगता है जब कोई बोल ही नहीं रहा तो मे बी इंटायर कम्युनिटी इंडोर से सच अ प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट. सो वी Hmm. ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल इन स्टीरियोटाइपिंग ऑफ आवर ओन कम्युनिटी. Hmm. सो बट आई हैव रिटन लाइक मैंने उसमें जो सीरीज लिखी भी है ना सिमिलैरिटी की, एंड Hmm. दिस इज वेरी फनी थिंग, this has been practicing from centuries. Nobody has written any academic book On इसको this. अकाउंट करते हुए. लाइक आई वाज सो, Hmm. जब मैं अभी तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम लगा के और भी देखूंगी. आई वाज सो सरप्राइज टू नोइंग दैट दिस देयर इज अ बांग्लादेशी हिंदू एंड मुस्लिम बोथ हैव दिस रिचुअल, जहाँ उनकी शादी होती है तो वो मछलियों को दुल्हा दुल्हन के जैसा तैयार करके एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं. एंड दिस इज Wow. डन बाय हिंदू एंड मुस्लिम And Muslims बंगाली both. both, Hmm. and which is so Hmm. fascinating ki why not any other Muslims Hmm. are doing. And then I That is got a to know, local culture. yeah, Hmm. that's a culture. And then I got to know Hmm. that one of my friend, he's from Maharashtra, Konkani, Hmm. I think Konkani something Muslim है वो. Hmm. तो Hmm. उनके यहाँ चौक बनाई जाती है शादी के पहले, एंड व्हेन यू सी द Hmm. चौक थिंग, द इंटायर थिंग, बीच में एक लैम्प रखते हैं, चारों तरफ उसके चीजें, जैसे मांडनी नहीं बनाते हिंदू कम्युनिटी रंगोली बनाती है, वैसे Hmm. बना करके इंटायर प्रोसीजर मतलब होता है. देन यू कैन Hmm. clearly see that these are their customs which they have still Hmm. Hmm. practicing. Yeah. This is same for Kashmiri Muslims and Kashmiri Pandits. When we have our Nowroz, Kashmiri Shia Muslims and Kashmiri Pandits have Navre.
both of them use they have to use some certain items in the thal or otherwise on the table, but the items will remain similar. Like walnuts दोनों लोग use करेंगे, कश्मीरी पंडित भी use करेंगे, कश्मीरी मुस्लिम भी, चावल भी दोनों लोग use करेंगे. It's actually a harvesting sort of thing. तो तब जो जो harvest हो रहा होगा वो दोनों cultures use करेंगे. सेम फॉर मैरिजेस, कश्मीरी पंडित मैरिजेस में भी हमारे जो फोकलोर्स वन मुन वो सब और टाइप ऑफ दुल्हन का क्या क्या मतलब बाल खुलने का एक रिचुअल है, वो सेम कश्मीरी पंडित्स में भी है, वो सेम कश्मीरी मुस्लिम्स में भी है. Exactly. So these are like very fascinating thing, and I don't understand why we do not talk about it. It should be in the mainstream academia. It should be recorded, and इसका पूरा हम हमें लिखना चाहिए, प्रॉपर अकाउंट बनाना चाहिए, एंड हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहिए कि हाउ वी आर इंडियन एंड हाउ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ रियलिटी वी आर लिविंग. So that's why I have written that वो मैंने पिन करके रखा है because I'm like this is the my most favorite part. So understanding that you are Indian Muslim and how blessed you are being Indian Muslim is very important for our next generation. हमारे खुद के भले के लिए. I'm not saying कि you should not think about entire nation का भला, but अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम अपने next generation के भले नेक्स्ट के लिए जनरेशन. सोचो. This would be so this would be giving them sense of reality कि हमारी reality क्या है, हम कहाँ से आए हैं, and also there is a no big conflict between your religion and your culture. And religion ने हमेशा allow किया है. The only thing is there are certain things like you have to accept if you are a Muslim, and इसका कोई भी कंट्रा वो नहीं होना चाहिए. लाइक दिस हैज बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड कि अगर आप मुस्लिम बन गए हैं तो जो आपका प्रीवियस कल्चर है उसको डिस्ट्रक्ट कर दो. ये हमें रोकना पड़ेगा. वी कांट डू दिस एंड वी हैव नेवर बीन डूइंग दिस. हमारे तो जिंदा है हमारे जो कल्चर्स हैं. तो ये चीजें हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखानी, तभी हमको एग्जिस्टेंस जो है पीसफुली सीख पाएंगे, एंड वो स्टार्ट होगा हमारे एक्नॉलेजमेंट से. Definitely. You have also worked a lot on Pasmanda Muslims. When we talk about Muslims overall, आपका जो काम रहा है Pasmanda Muslims पे, that is very thorough, and you're also very vocal about the rights of Pasmanda Muslims. So we'll go to the very basis of it because some of the viewers might not be aware what we are talking about. So हम शुरुआत से शुरू करते हैं. Who are Pasmanda Muslims and how do they live their lives? What are their rights? वो कैसे पीछे रह गए और कैसे उनकी empowerment के लिए काम किया जा सकता है? So the Pashmanda word is an umbrella term. So all the OBC Muslim, scheduled tribe, scheduled caste Muslim, उनको हम जो है basically हम Pashmanda Muslim के नाम से बुलाते हैं. And they are like there are no official data ऐसा कुछ, but जो intellectual हैं Pashmanda community के, उनके हिसाब से 80% तो होंगे मिनिमम पाशमानदा मुस्लिम, क्योंकि अशरफ मुस्लिम की जो बहुत सारी पॉपुलेशन थी भी, वो पार्टीशन के जो टाइम है वो चली गई थी पाकिस्तान में. तो दैट इज द ऑल्सो रीजन कि मोस्ट ऑफ द जो मुस्लिम है यहाँ पे वो लोअर कास्ट और ओबीसी मुस्लिम ही हैं. एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, लाइक देयर हैव बीन सो मच एलिगेशन व्हेनेवर आई टॉक अबाउट कि तुम लोगों ने ही तो वोटिंग किया था पार्टीशन के लिए. मतलब जब बैक देयर आर सर्टेन रियलिटीज, बट द थिंग इज दैट कि जो वोटिंग की जो शर्तें थी, most of the Pashmanda Muslim or lower, if you are even Ashraf and you come into lower Satra of financial background, you won't be able to. You wouldn't have able to vote because vote करने की कुछ शर्तें थी. आप इतने एजुकेशन इतना एजुकेशन होंगे, आप जमींदार होंगे, आपके पास जमीन होगी. अडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं थी कि अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट कर सकते हैं. तो ये बार बार जो बहुत ज्यादा ब्लेम होता है कि सारे जो अभी भी इंडियन मुस्लिम हैं उन्होंने वोटिंग की थी पार्टीशन के लिए, दिस इज रॉन्ग, फैक्चुअली रॉन्ग. वी कांट से व्हाट दे वुड हैव बीन डन, क्या उन्होंने किया होता, बट देयर इज एविडेंस कि पाशमानदा मुस्लिम के उस टाइम की जो लीडरशिप थी, उन्होंने जिन्ना के खिलाफ जाकर के इलेक्शन लड़े हैं. मोमिन कॉन्फ्रेंस करके था, एंड उसमें भी बिहार के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे जिन्ना के खिलाफ, तो ज्यादा सीट नहीं बट 6 सीटें जीत पाए थे वो. एंड इमेजिन ये 6 सीट भी वो तब जीत पाए थे जब उनका इन्फ्लुएंस, बिकॉज वो वोट ही नहीं कर सकते ना मोस्टली बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशन, तब भी उन्होंने 6 सीटें जीती थी. देयर हैज बीन अदर इंसिडेंट लाइक इट इज रिकॉर्डेड इन वन प्लेस की
40,000 पाशमानदा मुस्लिम, स्पेशली बुनकर समाज, लाइक आई कम फ्रॉम अ बुनकर समाज, Hmm. अंसारी बनारस की हूँ मैं, तो हमारी फैमिली ज्यादातर बनारसी साड़ी का काम करते हैं, लाइक दे क्या Hmm. बोलते हैं उसको बनाते हैं बेसिकली स्क्रैच से बनारसी साड़ी Hmm. को। Hmm. 40,000 जो बुनकर समाज थे वो दिल्ली गए थे प्रोटेस्ट करने, एंड उन्होंने वहां पे बोला भी था कि हमको पार्टीशन नहीं चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ही इस जमीन से उठे हुए थे, एंड दे हैड नो सच अ ड्रीम टू हैव अ डिफरेंट कंट्री बेस्ड ऑन रिलीजन, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था कि हमको रूल करना है या इस तरह की चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। Hmm. तो ये सब जो चीजें हैं वो इतनी बात नहीं हो पाती, डिस्पाइट द ग्राउंड मुस्लिम, द पाशमानदा मुस्लिम नॉट बीइंग वेरी इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ सियासत जिसको बोलते हैं। Hmm. तो यही थोड़े बहुत एविडेंस हैं, वोटिंग का तो मिला ही नहीं था। एंड सिंस यू कम फ्रॉम कश्मीर एंड नोबडी विल टॉक अबाउट इट, तो देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड वाताल, एंड Hmm. इवन कश्मीर में वाताल एक स्लर वर्ड यूज किया जाता है। Vatal, Vatal, वातल, yes. सॉरी, यस। Hmm. Hmm. वो एक पशमानदा मुस्लिम है, एंड यू सी दे आर एससी, दे आर डूइंग द Hmm. सेम वर्क, क्लीनिंग का जॉब करते हैं, उनकी But कॉलोनी। Kashmir had a very severe stereotype of this community. I mean, I have grown up listening to this that Vatal is actually a very derogatory term. Vatal is कम्युनिटी, we so most of them, I think, from their communities were sweepers and so they were called as vatals, but vatal otherwise also in our daily language is used as a very derogatory, and I feel very bad about it because it's something you're telling a person that you're of a lower this thing, you're making him or her realize it on daily basis. exactly. So I mean, you see the same thing has been happening in the Hindu fold, but how much work they have done, they have acknowledged this, like जो उन्होंने हरिजन नाम दिया उनको ताकि थोड़ी रिस्पेक्टफुल नाम हो जाए, Yes. है ना। जो डेरोगेटरी स्लर थे उनका उसको बैन किया कि यू कांट से दिस, अदरवाइज आपके ऊपर SC ST एक्ट लग जाएगा। Mm. अदर कम्युनिटीज को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर आप उनको कुछ भी कहोगे द पीपल विल कम क्राइंग, तुम एंटी इस्लाम हो। मैं एंटी इस्लाम क्यों हूँ? एंटी इस्लाम तुम हो बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग इट। आई एम Hmm. हाईलाइटिंग दिस, आई वांट Definitely. टू This फाइट is a अगेंस्ट very इट। important point. हाँ, तो मैं कैसे एंटी इस्लाम हूँ? यू आर प्रैक्टिसिंग इट, यू हैव नॉर्मलाइज इट, देन यू आर एंटी इस्लाम। आई जस्ट वांट टू फाइट अगेंस्ट इट। इनफैक्ट आई एम डूइंग द वर्क व्हाट इज रिटन इन इस्लाम कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। No बट discrimination. हाँ, तो जब ये हम मैं कर रही हूँ तो दे वुड अक्यूज मी एंड आई वुड बी लाइक दिस इज लाइक प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम विच यू हैव बीन प्लेइंग, जहां आपका पट भी हो चित भी हो, बिकॉज यू हैव अ सर्टेन स्टेटस, वो आपको जाने नहीं देना है। तो अगर मेरे मैं कर भी रही हूँ वो काम जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ सही जा रहा है, तो आप मुझे अक्यूज करोगे बिकॉज आपको हमेशा इतनी पावर मिली हुई है। इन द नेम ऑफ द इस्लाम दे हैव डन सो मेनी थिंग्स, तो वो मुझे अक्यूज करेंगे ताकि अदर मुस्लिम वोंट लिसन कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो सुनने से पहले ही वो मुझे एक इमेज दे देंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और उस इमेज के बाद क्या होना है कि लोग सुनेंगे नहीं, एंड दैट्स हाउ दे डिस्क्रेडिट यू। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं तो फैक्ट बोल रही हूँ ना, है ना। कश्मीर एज अ मुस्लिम मेजोरिटी, मतलब यू सेज कि हमको इधर का नहीं पता, बट दिस इज अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, वहां पर क्यों है ये डिस्क्रिमिनेशन? गुजर बकरवाल हैं, एसटी कम्युनिटीज हैं, दे ऑल्सो फेस सर्टेन थिंग्स। तो ये जो पाशमानदा कम्युनिटी है ये बहुत लंबे सालों से है, रिलीजन चेंज हो गया है बट अभी भी उनके जो पेशे हैं वो सेम है, अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। अब सम टाइम तो वो स्लर वर्ड, लाइक जैसे मेरी कम्युनिटी है तो हमारे लिए स्लर वर्ड है जुलाहा, तो इट्स लाइक वेरी डेरोगेटरी टर्म बट पीपल से दैट। एंड इवन सर सैयद अहमद खान ने तो बदजात भी बोला था कि बदजात कम्युनिटी है। तो we have been facing this kind of stereotype and within the Muslim community, so we have to fight against it, we have to speak about it। तो अभी जैसे कि पहले इनफैक्ट हम लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिलता था, एंड हिस्टोरिकल है, लाइक फतवे हैं जहां पर ये तक कहा गया कि जो ये मुस्लिम जिनको हमने कन्वर्ट किया है दे आर नॉट, ये हमारे थोड़ी ना हमारे दरबार में और इसमें आएंगे, बट वी नीडेड देम, लाइक ठीक है वो इस्लाम में आ रहे हैं अच्छी बात है, प्लस हमें जो अपना काम करने वाला चाहिए, हमारा धोबी मुस्लिम धोबी हो तो बेटर होगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो ठीक है, तो इनको कन्वर्ट कर लो एंड देन इनको 5 चीजें जो पिलर्स हैं इस्लाम के उतना एजुकेट कर दो, बट देयर इज नो नीड टू एजुकेट देम मोर देन दैट। इवन एक फतवा है, फतवा जहांगीरी शायद नाम है उसका, या आलम
आई हैव टू चेक इट। उसमें यहाँ तक लिखा गया है कि अगर इनको एजुकेशन देने का मतलब ऐसे है जैसे सुअर के गले में सोने का पट्टा डाल देना। दिस हैज बीन आवर हिस्ट्री एंड नोबडी टॉक्स Yeah. अबाउट इट। तो इस वजह से एजुकेशन भी नहीं मिली। बट जब 47 में इंडिया आजाद हुआ तो हमें भी एजुकेशन और सारी चीजें एक्सेस करने को मिली। लाइक आई एम द सेकेंड जनरेशन who received proper education. My dad was the first generation. So now people from my community realizing their reality and why there's a discrimination, why every voice we hear on the mainstream is of Ashrafia Muslim, and it mostly come from a very confrontational zone. हमारी तो खुद की नैरेटिव भी शेप करने की मतलब औकात नहीं है। हम भी वही सुनते हैं जो हमको अशरफिया मुस्लिम बोलते हैं कि तुम सुनाया मार, जाता है। ये है वही हमारे दिमाग में आता है। जबकि मैंने हमेशा, मैं ऐसे फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहां मुझे हमेशा ये बताया गया था कि हाउ वी कैन को एग्जिस्ट, बिकॉज इन द एंड फॉरगेट एवरीथिंग, एवरी आइडियोलॉजी, प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्रैक्टिकली वी आर माइनॉरिटी, व्हाई वुड वी वांट टू बी गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद मेजॉरिटी? Right, doesn't make sense, because if you think from a very basic human, Rational point of view. exactly, still you don't want to go into confrontation because you would be the most paying for it, right? मतलब अभी मैं एकदम ह्यूमन ग्रीडीनेस की उससे बात कर रही हूँ। डजंट मेक सेंस। तो मैं हमेशा ऐसे बड़ी हुई जहां मेरी फैमिली वुड बी वेरी थॉटफुल अराउंड देयर कि इफ आई वी आर बीइंग थॉटफुल इनफ और नॉट। हमारी शादियों में हमेशा मुझे याद है कि एक वेज स्टॉल लगेगा, बिकॉज हमारे हिंदू फ्रेंड्स आएंगे तो वो नॉन वेज अगर नहीं खाते तो देर ऑलवेज बीन ऑल द शादीज में कि एक हिंदू के लिए वेज स्टॉल लगेगा। मोस्टली तो बहुत सारे आते भी हैं नॉन वेज स्पेशली शादी में खाने, बट इफ दे डोंट वांट देयर इज स्टॉल फॉर यू। तो इतना अकोमोडेटिव नेचर एंड बिहेवियर देखा मैंने। तो देन आई फील कि और क्यों मतलब वहां पे जो लोग बैठे हैं वो हमेशा कन्फ्रंटेशन लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं? व्हाई देयर इज नॉट अ वेरी वॉइस कमिंग हु वांट्स टू बी इंडिया मोर कोहेसिव, जहां पे एक दूसरे से साझा करें, थोड़ा हम शिकायत अपनी लाएं तो थोड़ा उनकी भी सुने कि हाँ हमारे में भी ये प्रॉब्लम है एंड वी विल वर्क ऑन इट। तो अब जब हमारी सेकेंड जनरेशन जो है वो एजुकेटेड हो रही है तो आई एम सीइंग पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड। वो जो ग्राउंड पे लोग बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी मोर वोकल, दे आर ट्राइंग टू आस्किंग फॉर कि वी नीड मोर प्रेजेंटेशन। जितने भी मुस्लिम्स के नाम पे इंस्टीट्यूशन बने हैं, लेट इट बी वक्फ बोर्ड, लेट इट बी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कुछ भी हो, वो सब अशरफिया कम्युनिटी ही जो है लीड करती है। तो हमारी प्रेजेंटेशन कहीं है ही नहीं। सो वी डोंट गेट रिप्रेजेंटेड एनीवेयर, हमारी वॉइस नहीं सुनी जाती है। हमारे क्या नीड्स हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म वी आर नीडिंग एंड लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ वेलफेयर वी नीड फ्रॉम द सोसाइटी। इवन जो हमारे नाम से वेलफेयर भी आता है, लाइक आई वुड मेंशन दिस थिंग। अगर आप एक फॉर बहुत ही सिंपल एग्जांपल में समझाने के लिए, आज अगर हिंदू कम्युनिटी में हमें रिकॉग्नाइज नहीं करें कि दिस इज द दलित कम्युनिटी, दिस इज द छत्री, दिस इज द, ऐसा करके नहीं करें, एंड जो वेलफेयर टारगेट करके आता है लोअर कास्ट को, वो अगर सिर्फ हिंदू के नाम पे आए तो क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, जहां नहीं जाना है वहां के लोग उसको एक्सेस कर लेंगे, राइट? मैं मानती हूँ कि क्लास भी एक वो होता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट देन जनरल कास्ट के जो वो है गरीब लोग हैं उनके लिए अलग वेलफेयर सिस्टम बना रखा है। बट यहाँ तो मुस्लिम के नाम पे जो भी आता है, मेनी अ टाइम दोस पीपल, हमारे नंबर यूज होते हैं और उस वेलफेयर का फायदा जो वेल कनेक्टेड लोग हैं वो एक्सेस कर लेते हैं। सो दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक्नॉलेज ही नहीं होता है तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? So I think I have explained in a very काफी लंबा रहा, but Thorough way, yeah, but you have been very thorough. I think then overall we reached at this conclusion that whenever we talk about Indian Muslims, it's not a state at large. I think Muslim community within themselves have a lot of shackles to break and lot of work to do. I mean, for at least Pasmanda community, we have to generate a lot of awareness within people that how does this community function and what can we do for their welfare. So finally, we are on this point that Muslim community definitely needs to work within themselves to make it a better part of nation building. Thank you so much, Amna. Thank you so much for being here with us. It was a very thought provoking and interesting session. Thank you so much.
Thank you. Thank you for inviting me and giving the platform. I do love talking wherever I can get the platform so I can create more awareness. People would be, I hope it will help people to understand the my point of view. It's more than my point of view. I want to create awareness for entire community. So it's not necessary that everybody will agree to what I'm saying, but if they can understand, yes, these things are also exist, then they can go ahead. They can research their own, but at least they focus in this area. It would be great. Thank you very much for giving your Definitely. platform. Definitely. Hopefully, I will Thank be you so coming much. again and again. Yeah, sure. We'll be calling you again. This was a very interesting conversation. Thank you so much. Thank And thank you for the viewers for watching us. thank you. Bye. Bye.